First ball, lofted and he's got the distance at last. So first ball 6 and next one from the bowler again on side पर गेंद को उछाला मिड विकेट पर छक्के के लिए. तो इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को उछाला इस वक्त 6 रनों के लिए. तो 3 गेंदें और 3 छक्के और बेहतरीन शुरुआत इस वक्त श्रेयस कर चुका है. जहां तक श्रेयस का सवाल है, पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 124 रन की अविजित पारी उन्होंने खेली थी. ही स्कोर्ड अनबीटन 124 इन द प्रीवियस मैच. श्रेयस भाई और उस सफलता के सिलसिले को यहां पर आगे बढ़ाते हुए अगेन 6 नंबर 4 एंड ही जस्ट लुकिंग ऑन फायर. 4 गेंदे 4 छक्के और श्रेयस एक बार फिर से यहाँ पर अपना जलवा इस मैदान पर दिखाते हुए और निखिल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. लेग स्टंप से बाहर 6 नंबर 5 सिक्सेस इन ए रो और जरूरत है एक छक्के की 6 सिक्सेस पैनल में इस वक्त जुड़ने के लिए. और जहां तक सवाल है इस वक्त निखिल का, तो इस वक्त अंतिम गेंद बेहतर नहीं. 6 सिक्सेस इन ए रो. व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर श्रेयस भाई. 6 छक्के पहले ओवर में 36 रन्स came from the first over and this is an absolutely magnificent start for श्रेयस भाई. और पहले ओवर में 6 छक्के बटोरने के बाद देखना है कि अगर 5 ओवर तक पूरे बल्लेबाजी करते हैं श्रेयस भाई तो कितने रन यहां पर बना सकते हैं. पिछले मैच में नाबाद 124 रन 124 अनबीटन स्कोर्ड बाय श्रेयस भाई इन द प्रीवियस मैच एंड नाउ ही स्टार्टेड ट्रेमेंडसली इन दिस मैच. 6 सिक्सेस इन द फर्स्ट 6 डिलीवरीज. फर्स्ट बॉल इस बार उछालना चाहा गेंद इस वक्त शॉर्ट सरमान पर बेहतर तरीके से फील्डिंग कर ली गई. नो रन स्कोर्ड. सीनियर टीम्साच्या चारी ऐकॉन एक कॅप्टन्स एक ओनर्स आना हांगा रजिस्ट्रेशन डेस्क काय कमांडी म्हणून घेतास. तो गेंदबाज दर्शन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी अपील एंड इज गॉन. इन फैक्ट गॉल इन स्टॉपर ऑफ द बैट एंड विकेट कीपर कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटी बिहाइंड द स्टंप्स. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. और जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट कीपर का, तो विकेट कीपर इस वक्त इस कैच को लपकने में सफल. टॉप पिच पर टकराने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी. और दर्शन का जहां तक सवाल है, तो दर्शन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दर्शन जिन्होंने पहले मैच में हनुमान वॉरियर्स के लिए शतक झड़ा था और अविजित रहे थे और यहाँ पर गेंदबाजी में अपना हुनर यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज इस वक्त तैयार. दर्शन अपने ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त उछाला मौका कवर पॉइंट फील्डर के लिए और इसी के साथ विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 2 इज नाउ बैकिंग टू पैविलियन. उछालना चाहता स्क्वायर ऑफ द विकेट, टॉप पिच पर गेंद टकराई और आखिरकार गेंद को लपक लिया गया. और यहाँ पर देखिए एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. सॉफ्ट डिसमिसल at cover point by the fielder and the batsman has to depart. 2 wickets down, 36 on the board. Second over in progress और 6 छक्के झड़कर इस वक्त श्रेयस भाई नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद 6 गेंदों में. और इस बीच गेंदबाज दर्शन बेहतर एक्शन, बेहतर गेंदबाजी की एक्शन. और जहां तक सवाल है बेहतर लेंथ और लाइन और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर दर्शन इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट. He already captured 2 wickets in this over और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Good one, fantastic delivery. Just kept lower, just went wide of the stumps. और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो सिर्फ एक गेंद इस ओवर में बाकी और गेंदबाज इस वक्त तैयार. Again, this time top edge and clear defense. अंतिम गेंद पर छक्का जरूर लगा लेकिन ऐसा कहना पड़ा कि बेहतरीन ओवर, फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम दर्शन. एंड आफ्टर 2 overs
42 for 2. The equal battle is now progressing here. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गरुड़ा राइजिंग स्टार जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ हनुमान वॉरियर्स के खिलाफ इस वक्त 42 रन जोड़ चुका, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ अथर्व गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, फुल टॉस, swings and 6 runs. 7 consecutive sixes for श्रेयस। और अथर्व जो कि छोटे खिलाड़ी जरूर लेकिन काफी प्रतिभाशाली, और यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का जरूर प्रदान कर चुके। देखना है कि अगले गेंद में वो किस तरह से यहाँ पर कम बैक करते हैं। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद फ्लाइट है, it's gone caught behind. In fact, it's got a big nick on that, and wicket keeper made a no mistake. Darshan took the catch, and that is the wicket number 3rd. So Shreyas departs after being hitting 7 consecutive sixes. Have a look at this in the replay. Just gone for a mighty heave. Got his big nick. He's got a big reflection on that, and the wicket keeper behind the stumps made no mistake. और श्रेयस का बेशकीमती विकेट गिर चुका है। 7 छक्के, 42 रन उन्होंने बनाए, और 8 गेंदों पर 42 रन बनाने के बाद इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए। स्ट्राइक रेट इस वक्त 525, 525 स्ट्राइक रेट फॉर श्रेयस। 42 runs he scored in just 8 deliveries. Love that in the air, and he dropped that one. He dropped that one this time. Straight forward chance gone in vain. मिड ऑफ पर जो फील्डर थे इस वक्त गेंद से ऐसा कहना पड़ेगा अपनी नजरें उन्होंने हटा लिया अंतिम क्षण में, मिस जजमेंट होता हुआ। और यहाँ पर बल्लेबाज जीवदान प्राप्त कर चुके हैं, और अथर्व फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा, एंड विद दैट सिंगल रन द 50 कम्स अप फॉर गरुड़ा राइजिंग स्टार। और इस वक्त अथर्व गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खेल दिया। इस वक्त रन्स नहीं लेना चाहेंगे, और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स इस वक्त रुक चुके हैं 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ पर खासकर इस वक्त गेंदबाज अथर्व का जो कि नन्हे से गेंदबाज है लेकिन बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए गेंद को खेल दिया। इस वक्त कवर पॉइंट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस ओवर में अंतिम बार अथर्व गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। Driven down to mid-on, brilliantly fielded, chance of a run out, and this time he's gone! He's gone this time. Fantastic work made by the bowler Atharva after receiving the throw very quickly. He's just picking the wickets. And a good piece of work also made by the mid-on fielder just inside the fence. Have a look at this in the replay. Damdar stroke था, बेहतर फील्डिंग इस वक्त, बेहतर रिटर्न, बेहतर पिकअप और बेहतर तरीके से इस वक्त विकेट को उखाड़े गए इस वक्त गेंदबाज अथर्व द्वारा। तो विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर्स ऑफ Hanuman Warriors after being conceding 36 in the first 2 overs. They come back very well, conceding just 15 in the next 2, and also they captured 4 wickets. 2 ओवर का खेल बाकी, अभी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। Loved at that one, and this time I think just 6 runs. Celebrations is going on there, but I think it's crossed the fence. इनका जूता जो, इनका पैर जो है सीमा रेखा से बाहर जा चुका था, लेकिन यहाँ पर फील्डर को कुछ इसका पता ही नहीं है। वो यहाँ पर सेलिब्रेशन जश्न मनाते हुए, लेकिन छक्का यहाँ पर घोषित करते हुए अंपायर। और देखिए यहाँ पर have a look at this in the replay, किस तरीके से हुआ था। गेंद हवे में उछली, गेंद को इस वक्त लपक लिया गया। देखिए यहाँ पर जस्ट टच द फेंस एट द लास्ट मोमेंट, और यहाँ पर छक्का घोषित कर चुके हैं। तो 6 रन उनके खाते में जोड़ चुके हैं। 57 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट। अभी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, नो बॉल का इशारा। मिसिंग 2 फॉर द लेग स्टंप, वाइड, नो बॉल इन फैक्ट। ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಣ ಮೇಲ್ನಿ ನನ್ನಿ ಸಕಡಾನೋ ಜನ ಖಾವ್ ಕಮಂಡಿಂಗ್ ಮುಂಗೆತ ಸರಿ 58 for the loss of 4 wicket। और गेंदबाज अभी लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। 1 more wide added to the total scoreboard, moving up to 59 for the loss of 4 wicket। अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज अभी 2 लगातार, एक नो बॉल और एक वाइड यहां पर फेंक चुके हैं।
Loved it, and I got that one for a maximum. 65 for 4 now. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 65 रनों पर. 65 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. अभी गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, स्लोवर गेंद, 6 runs. Consecutive sixes for the batsman. वैशांत बल्लेबाज जो कि 4 छक्का अब तक झड़ चुके हैं और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए. और गेंदबाज इस बीच अभिनंदन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर. रन के लिए दौड़ पड़े, रन का खतरा, थ्रो. इस बार थ्रो को रिसीव करने में सफल. 1 रन बल्लेबाज को मिला. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 72 रनों पर. 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. निस्संदेह 100 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा. यहां पर गरुड़ा राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो. और इस बीच अभिनंदन अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार पल्स एंड 6 रन्स. शॉर्ट गेंद थी और बल्लेबाज के पास मौका था इस वक्त गेंद को उछालने का छक्के के लिए. और जहां तक का सवाल है, इस वक्त छक्के का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 78 रनों पर. 78 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. एंड दिस इज द ओवर नंबर 4 ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और गेंदबाज अभिनंदन इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, छोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद इस बार पुल किया. इस वक्त मिड विकेट पर मौका, जी नहीं, गेंद क्लियर हो चुका है इस वक्त स्क्वायर लेग पर छक्के के लिए. 4 ओवर्स कंप्लीटेड. और यहां पर देखिए टॉप एज पर जरूर गेंद टकराई थी, लेकिन स्ट्रोक्स इस वक्त जा चुका है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. 84 on the board. 4 overs completed. Last over is now going to start in their innings. अरविंद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर पर छक्के के लिए. एलईडी स्क्रीन के दाईं ओर इस वक्त गेंद जाकर खंबे पर टकराती हुई और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 90 फॉर द लॉस ऑफ 4 wickets now in this situation. 5 balls left in their innings. अरविंद गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार. लेग स्टंप से बाहर, just drifting down the leg side at the last moment. Single run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 91 in fact. 91 for the loss of 4 wicket in the over number 5th and last started just short वाले को. और अरविंद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. इस बार गेंद को खेल दिया. बेहतर गेंद इस वक्त मिड विकेट पर. तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन प्राप्त करने में सफल. 92 नाउ. 92 for the loss of 4 wicket. Just 4 balls left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज अरविंद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस और गेंद को खेला मिड विकेट पर, लेकिन गेंद को रोकने में सफल बेहतर तरीके से. फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय मिड विकेट फील्डर. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 more run added to the total. और देखिए किस तरीके से गेंद को रोका था सीमा रेखा के अंदर. बेहतर फील्डिंग. अरविंद फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा. और ऑफ कटर गेंद जरूर थी, लेकिन गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर गुजरती हुई वाइड के रूप में रन उनके खाते में जुड़ चुका है. 94 for 4. 3 balls left in overall calculation in their innings. Arvind. Good one, better one. Get some extra bounce. और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 94 रनों पर. 94 for 4. The second last ball of their innings is now coming up. Arvind bowls. Drifting down the next side, wicket keeper misses. Just a single run. In fact, it's 1+1. 2 runs added. They come back for the second, and this time I think he's gone. He's gone at the striker end. Run out happened. So 2 runs added to the total and a wicket lost in this delivery. So यहाँ पर देखिए किस तरीके से रन आउट हुआ था और 2 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में. Still 2 balls left in overall calculation in their innings.
और अरविंद इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद उछाला लंगॉन पर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ 100 comes up for Garuda Rising Stars. 102, one ball left. अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, लास्ट बॉल रिमेनिंग देयर इनिंग्स और इस बीच अरविंद अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, top edge, and he's got the distance straight in front of our commentator box stand, and he just finished the innings in a stride with a 608 runs scored by Garuda Rising Stars. And now the target for आता या मॅच जातरी हांगा स्टेजार एक सान ट्रॉफी अनविलिंग आणि वरलाल जर्सी अनविलिंग प्रोग्राम आसा। ताजे नंतर सब ज्युनियर मॅच कंटिन्यू जाता आणि मध्यंतू सीनियर टीम कॅप्टन एक ओनर हांगा येईल कोणें आसल्यार जालतीत लोक घेवन तुमगेले जर्सी हांगा कलेक्ट करका। एक टीमाच मात येईल आसा जी वरलाल 3 टीमाचे सीनियर मेंबर्स कोणेंय आसल्यार टीमाचे जालतीत लोक हांगा येवन तुमगेले जर्सी कलेक्ट करका। स्टेज प्रोग्राम जातरी नेक्स्ट मॅच असचे शेषा सुपर किंग्स आणि गरुडा रायझिंग स्टार्स। या मॅच जाल तशीची फर्स्ट टॉस जाता मागीर स्टेज फंक्शन जाता। जाल निमित्त शेषा सुपर किंग्साचे कॅप्टन हांगा येवन तुमगेली टीम रजिस्टर करका। या इनिंग्स जाऊ भितर तुमगेली टीम रजिस्टर जाऊ का। धन्यवाद। तो इस तरह से मैच नंबर 4, मैच नंबर 4 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इन जूनियर कैटेगरी, Hanuman Warriors versus Garuda Rising Stars will now progressing here. The target is 109 for Hanuman Warriors set by Garuda Rising Stars। और देखना है कि Hanuman Warriors इस 109 रनों के लक्ष्य तक 109 के लक्ष्य तक पहुंच पाता है, यानी निर्धारित 5 ओवर्स में, यानी निर्धारित 30 गेंदों में। और हनुमान वॉरियर्स की पारी की यहाँ पर शुरुआत होगी छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर हनुमान वॉरियर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, Gopi. 109 target set for the team Hanuman Warriors. Here comes the first ball. The centurion of the previous match is in strike, and first ball it starts with a wide by the bowler Ashutosh, and a good bowler, good spin bowler, orthodox leg spin bowler, and it can mix the ball very well. And this time short miss delivery, going for the full shot. It's going to a huge one. Big fish in the net. The celebration, we can understand that they know exactly they got a huge fish in the net. And the man who got a century in the previous match has got 100 behind his name. Unfortunately, he's just wanted to go for the pull shot. Doesn't get hold of that improperly. And Ashutosh, what a wicket for him. Absolutely huge fish in the net. Fantastically delivered. And leg spin delivery. The batsman think it might be a shot enough for him to go for the pull shot, but he played it straight to the hands of short mid wicket. Here comes the next one, right arm over the wicket. Oh, lovely delivery, brilliantly bowled by Ashutosh. He's really on the heart of all cricket lovers here. The talents which is coming from the GSB community, absolutely it got a future as far as his bowling action is concerned. Beautiful leg spin bowling action. Not only bowls the leg spin, but altogether it can bowl, mix the ball very well with some wrong one and the straighter one. A fantastic bowling display. So long way to go, 108, which is a target for the team. Hanuman, the Warriors absolutely there in a worry that they lost the wicket of Shreyas. From the ball is coming from long way. Ajit Pai आणि But umpire हांगा ग्राउंड saying the ball आयिल्ल्यासाठी is just going वेदिकेर over the निमून घेता stumps. आसा. Beautifully bowled by Ashutosh again.
Right among भ्रष्ट फुड्डाच्या सुधीर पै आणि येईल the wrong one. आणि त्याला वेदिके रेवका. After that, 2 leg spin balls, he bowled off cutter beautifully, and the batter has got no answer for particular delivery. So far, only 1 run conceded in this over. And just a chance for the fielder to take. Oh, he drops it. He drops it at cow pointage, and it might be the wicket number 2 for Ashutosh. But unfortunately, the fielder has dropped the catch, and scoreboard numbers on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Here comes Ashutosh with the googly leg spin bowling. Beautifully bowled. The fantastic over which is comes to an end here of Ashutosh. 2 runs and a wicket from Ashutosh, and what a wicket here for Ashutosh. The wicket of the centurion, the who got a century in the previous match. Shreyas back in the pavilion, Dhanush back in the pavilion, and it's 2 for 1. 107 is the target, and 109 is the target, correction. And they got only 2. And first ball of the over number 2nd, and welcome with the boundary. Welcome boundary 6 in fact by the batter, and the bowler brought into attack to bowl the second over. ज्युनियर टीम्साचे अभिषेक. कॅप्टन एक आयकॉन कोणी येईल जाल्यार तुम्ही हांगा रिपोर्ट करका. तुमगेले जर्सी लॉन्च आसता जी ज्युनियर टीम्साचे मेंबर्स रजिस्ट्रेशन डेस्काला येवन तुम्ही रिपोर्ट कराची. Thank you. And Kedar is off the mark with the 6, and here comes Abhi, right arm over the wicket balls. Ooh, a lovely delivery indeed. The ball is almost stuck into the back foot of the batter. No run scored. Good comeback here by the bowler Abhishek. You know exactly how to restrict the big shots in his over. Right arm over the wicket. Balls to Kedar. Oh, bowled him, cleaned him up. He just disturbed the furniture with that beautiful delivery, which is straight a 1, and between bat and pad hits the stumps. Wicket number 2 gone. Just have a look at it in the replay. The batsman just tried to make a little bit room to play the shot, and bowler just following the batter. Fantastically delivered. And once again, have a look at it in the replay again in the LED screen. That was a perfectly delivered. Fantastic bowling performance. 8 for 2 in the over number 2nd in progress. One more lovely delivery. Off cutter coming into the batter. Off the back foot, played it down to short extra coverage and for a single. With that single, scoreboard moves on to 9 for 2. It's very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance by the bowlers of Garuda Rising Stars. Short pitch delivery, left it into the deep long one for a maximum. So with that 6, scoreboard moves on to 15 for loss of 2 wickets. Still needed the more runs. 95 more runs required for the victory. Abhi again. Balls wanted to go for the expensive drive. Lovely work done by the wicketkeeper behind the stump now. No third umpire. So that umpire will go in to give their own decision. It's a not out from Rupesh, the umpire. Rupesh. It's not out, and the batter is safe. The benefit of doubt which is given for the batter. It's 15 for 2. It's 94 required from 18 balls. So over number 2, which is comes to an end. Two good overs for the team. Hanuman Warriors of Garuda Rising देवस्थान Stars. ट्रस्टी गणेश कामत महिलांची त्यांनी वेदिके रेवका म्हणून निमून घेता सर. Shrikant Pai. Oh, take outside edge of the bat. Wicket keeper behind the stump missed it and went into the boundary. Straightforward opportunity for the wicket keeper to take the catch. And just have a look at the replay. The ball which pitched in the line. Lovely delivery. A little bit extra bounce. And the deflection coming from the bat. 19 on the board for the loss of 2 wickets. Still long way to go. 90 needed from 17. Pulls it straight to the hands of mid wicket. Not for run.
Small ground, very difficult to get the single when the ball is coming very quickly to the fielder. Shrikant Pai, right arm over the wickety balls. Beautifully ball, kept low, last moment. Very good line maintained by the bowler so far. Shrikant is a tall man. We can see that in that the bowling department of team Garuda Rising Stars, they have got two tall players, Shrikant and Danu Shreyas. This time catch it is a call and shot of the field went into the fence. One bounce for 4 runs. With that bound, discovered Namuzan to 23 for loss of 2 wickets. They needed such kind of treatment from the batter to get into that target. The over number 3 is in progress. Still long way to go for the team Hanuman Warriors. They have to play like Warriors if they wanted to win this match. Like a lovely delivery, good line. Bowled outside the line of off stump. Seeing the batsman is standing well outside the line of leg stump. And just getting that line away from the batter. And a very important dot ball. 86 needed from 13 balls for Hanuman Warriors. Lofted, and he'll going to get the distance for that. And 6 runs in this last delivery of the over number 3rd, which is comes to 9. It's 29 for 2 after completion of over 3. 80 needed from 2 overs. And it looks like just a format is left in this game, because 18 2 means even 12 sixes will going to take them into 72. Still they got a shortage of 8 runs, so that I think it's all over for the team Hanuman Warriors. Beautiful off-cutter there from Vaishu. And wicketkeeper in a fraction uprooted the stumps, questioning over the umpire. आजी आमगेलोटू हांगा अजित पै मामा आयलांची आनी दिवंगत अण्णप्प पै मामनी निर्मला पै हंगेले सुपुत्रो हंगी सावकार बाप पै फॅमिलीचे मेंबर तशीची आईचे दिसांतू डिलिव्हरी म्हळ्यार एक हॉड ऑर्गनायझेशनाचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जावन आनी काम करता आसाची हंगेले अंडर मस्त जन आसाची आमकां एक बारी खुशी विचारता हांगाचे कॅनरा हायस्कुलाचे एक स्टुडंट जावन तांणी सूर केलेले बॅचलर डिग्री NIT दुकोनू मेकॅनिकल इंजिनियरींग जावनू तशीची PG आनी IIM बेंगलोर दुकोनू डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट केल्ले हलव संस्थेन काम केलें तांतू लोधा ग्रुपांतू एसोसिएट वायस प्रेसिडेंट जावन काम केला डिलिव्हरी इंडियाचे एक लार्जेस्ट फुल्ली इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्वीस प्रोवायडर आमगेले हांगा मंगळूरा देखून सूर केलेले आनी बिल्ड फ्रॉम स्क्रॅच केला ताजे निमित्त आमकां एक भारी गौरव विचारू आनी आमगेलो टसाची आमकां मस्त नमूने सहाय्य केला आमगेल्या एसोसिएशना तर्फेन हांकां एक गौरव अर्पण करता म्हणून हांव आमगेल्या प्रेसिडेंटान निमून घेता आसा अजित पै मामाका आता स्वागत करता आसाची $35 for 2. So one more wicket back in the pavilion. I think now last over remaining, and they have to get huge runs to win this match. 75. तशीची आमगेलो टू प्रेस्टो फुड्डाचे सुधीर पै माम जाल्यार हांगा वेदिकेर आसाची आनी जाल्यार आमकां मस्त एक हेल्प केलेलो आसा हे एक टुर्नामेंटांत हांकां जाल्यार एक पूल दिवन स्वागत करता तशी मेमेंटो दिवका म्हूण निमून घेतास धन्यवाद. Thank you so much, and we are grateful and thankful for our dignitaries for your heartfelt contribution for the success of this cricket tournament. And coming to this match, beautifully balled, middle stumps uprooted. Now just a formalities left in this game to complete the matches here. What a fantastic delivery there from Shreyas Pai. Of course, he is little bit disappointed from the bat. He scored 36 in 1 over in the last in that innings,
And now he's contributing from the bat. 74 needed from 4 balls. Looks like the team Garuda Rising Star. They're really rising with the bat and the ball and even in the field against the team Hanuman Warriors. 4 balls remaining to complete the formalities. Lovely delivery to complete the delivery number 3 of this over. Just 3 balls remaining to complete the formalities. Little bit disappointment performance from Hanuman Warriors. Driven that one into the cover point region, and one more single with that single scope more than 36 for 4. Last 2 deliveries left in this particular match. Once they lost the wicket of Darshan, everything is over. Again played it down to mid-on region for a single, and trying for the run out, missed the stumps. And last ball remaining of this match, and a huge victory in fact for the team. 37 for 4, 72 needed. Lovely delivery and appeal for leg before wicket. Umpire says not out. 1 run scored. 70 runs victory for the team. 70 run huge victory for the team Hanuman Warriors. Congratulations Hanuman Warriors.